members of High Court Bar Association Multan. Assalamu alaikum. It's really a good opportunity to talk all of you. As you know that there are a lot of members in this electoral college, around about 14,000, and approximately 30 bars are part of this High Court Bar Association. So it's always difficult for any candidate to contact all the members in this short span of time. So I would like to apologize those people, those honorable members to whom I cannot contact up till now. So in that way, it is a good opportunity to express my views and to convey my message to all the respected members. Basically मैंने लॉ LLB के साथ साथ MBA फाइनेंस किया और काफ़ी अरसे तक लोअर कोर्ट्स में और मुख्तलिफ ट्रिब्यूनल्स वगैरह में अपनी खिदमत सर अंजाम देता रहा. लेकिन 2014 में LLM का एक बैच बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी ने कराया. उसमें मेरा एडमिशन होने के बाद मैंने बाकायदा हाई कोर्ट में अपना ऑफिस सेटल किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बड़े अच्छे लोकेशन पे मुझे अल्लाह ने ऑफिस दिया जहाँ पे मेरे एसोसिएट्स भी हैं. तो उसके बाद से फिर लॉ रहबर के नाम से हमारा ऑफिस है. तो जब प्रोफेशनली आप एक जगह पे सर्वाइव कर रहे हो तो आप समझते हो कि प्रोफेशनली भी आप दूसरे लोगों से ज़्यादा बेहतर काम कर रहे हैं जो आपके कंपटीशन में कैंडिडेट्स हैं, तो फिर आप कंफर्टेबल होते हैं. मैं समझता हूँ कि किसी भी इंतखाब में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार के लिए सबसे पहली जो बात है उसका अपना विजन है, उसकी अपनी सोच है कि आखिर वो क्यों इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है. ट्रस्ट में से भी कुछ पूछ सकते हैं कि आखिर हम आपको वोट क्यों दें. तो कई जगह पे ये दोस्तों ने बात भी की है और पूछा भी है. तो मैंने जो मेरी सोच है जिसके लिए मैं इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूँ मैंने उनसे शेयर की है. तो हर कैंडिडेट के पास अपना प्रोग्राम होगा. मैं अपनी बात करूँगा कि मैं समझता हूँ कि हमारे जो ऑफिस बेरर्स हैं उनको इफ़ेक्टिव होना चाहिए, उनको मौसर होना चाहिए और उनको जो रिवायती चीज़ें हैं उससे आगे जाना चाहिए. मैं नहीं समझता कि सारी रिवायती बातें गलत होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें रिवायतों से आगे जानी चाहिए. VN है और हम दोस्तों ने जो मिलके एक प्लेटफॉर्म बनाया है लीड्स लॉयर्स एम्पावरमेंट एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी, उसकी मुताबिकत में हमारा जो बुनियादी मरकज़ है, जो बुनियादी सोच है वो ये है कि हम अपने जो लॉयर्स जो ख़ास तौर पे जो बिगनर्स हैं उनको फैसिलिटेट करना है. तो हम लॉयर्स रिसोर्स सेंटर बनाने का प्रोग्राम रखते हैं. तो वो इंशाल्लाह ताला कामयाबी की सूरत में हम सबसे पहला काम लॉयर्स रिसोर्स सेंटर बनाएंगे. लॉयर्स रिसोर्स सेंटर में जो खासतौर पे ख़वातीन हैं, जो नौजवान वकला हैं, उनको जिनके पास ऑफिसेज नहीं हैं उनको हम फैसिलिटेट करेंगे. को वर्किंग प्लेस टाइप हम उनको एक ऑप्शन देंगे ताकि अगर एक कोई बिगनर है और उसके पास कोई बहुत बड़ा सेटअप नहीं है, स्टेनो अवेलेबल नहीं है, क्लर्क अवेलेबल नहीं है, ऑफिस अवेलेबल नहीं है, बट ही और शी इज पैशनेट टू वर्क एज अ लॉयर इन हाई कोर्ट बार इन हाई कोर्ट. सो उसको एक हम सपोर्टिंग आप कह लें कि पूरी जो है ऑफिस देंगे जो उनको पूरा सपोर्ट करेगा. और उस रिसोर्स सेंटर में ना सिर्फ ये कि आपकी ये पैरालीगल सर्विसेज की बात होगी, बल्कि रिसर्च के हवाले से भी जो हम कर सकेंगे और जो जितनी ड्राफ्टिंग के हवाले से जितनी उनकी अदरवाइज जो भी बेनिफिट्स की बात होगी उसको हम लोग आफ्टर करें. सेकेंडली ये जो है बामकसद तकरीबात जिससे लोगों में शऊर भी बेदार हो, लोगों के लिए रिक्रेशन भी हो और मेंबर्स की आपस में कोऑर्डिनेशन भी अच्छी हो, वो हमारे एजेंडे का हिस्सा है. उसको हम फोकस करेंगे इंशाल्लाह कामयाब होकर. मैक्सिमम आप देखेंगे कि टाइम के हम यूटिलाइज करेंगे फॉर द वेलफेयर ऑफ बार. लॉयर रिसोर्स सेंटर के साथ साथ हमारे पास एक प्लान है कि हमने किस तरीके से मौसर तकरीबात करनी है, बार का इमेज कैसे बेहतर करना है, अपना जो हमारे वकला हैं उनके लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स को किस तरह से हमने बूस्टअप करना है, उनको कैसे हमने जो है वो एक आप कह लें कि अच्छी कोऑर्डिनेशन डेवलप करनी है. तो बतौर सेक्रेटरी सिर्फ यही नहीं है कि ऑनर्स बोर्ड पे नाम लिखवा लिया जाए या नंबर ऑफ केसेस अपने बढ़ा लिए जाएं. इस तरह का कोई मेरा एजेंडा नहीं है, ना ही मेरा कोई प्लान है. तो मेरे लिए यही इज़्ज़त अफजाई की बात है कि मैं आपसे मुतारिफ हूँ और अल्लाह ताला को मंजूर होगा तो इंशाल्लाह हम मुंतखब होंगे और अच्छे तरीके से और मुनफरिद तरीके से अपना नाम भी बनाएंगे और अपनी बार का नाम भी बनाएंगे. तो काफ़ी सारे दोस्तों को वजाहत दे चुके हैं और पता भी है उन लोगों को कि हमारे कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स ने जो है एक सेटलमेंट करवाई कि इस बार आप जो है एक दोस्त को चांस दे दें और आइंदा वो हारें या जीतें तो आप उम्मीदवार होंगे. तो मैं समझता हूँ कि जो लोग आपके साथ होते हैं वो मुखलिस होते हैं,
ان کا مشورہ ہو سکتا ہے، بعض دفعہ ہو سکتا ہے وہ درست بھی نہ ہو، بعض دفعہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو اچھا نہ بھی لگ رہا ہو، لیکن آپ نے جو آپ کی کور دوست ہیں، کور ٹیم ہے، اس کے ساتھ مل کے چلنا ہوتا ہے. تو ان کی یہ جو ڈیسیژن تھا اور اس کی سیٹلمنٹ تھی، اس کے مطابق میں نے وہ الیکشن مکمل نہ کیا، اور اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے ہم نے جن موصوف کو ہم نے جن کو فیور کیا تھا ان کی جو ہے ساتھ گفتگو رہی، اور انہوں نے جو اس وقت بیان کیا کہ جناب میرے تو حالات ایسے برے ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا، وہ اتنا وہ تھا کہ میں پولیٹیکل سے زیادہ سمپیتھیٹک ہو کے میں نے سوچا کہ یہ فیصلہ کرنا چاہیے. تو ہم نے پوری ایمانداری کے ساتھ سپورٹ کیا، اور وقت نے ان کو مطلب مہلت اس لحاظ سے ان کو کامیابی نہ دی وقت نے، اور انہیں ایز اے ان کی کمٹمنٹ کے مطابق، اور جو لوگ تھے ساتھ ان کو یاد کرایا گیا کہ آپ نے ہارنا یا جیتنا ہر دو صورتوں میں آپ نے ہمیں سپورٹ کرنا ہے. لیکن وہ پھر میں حیران ہو گیا ہوں کہ ہمارا جتنا اعتماد والا پروفیشن ہے کہ آپ دیکھیں کہ لوگ بلینک پیپرز کے اوپر سائن کر کے ہمیں دے جاتے ہیں، خالی پیپرز پہ ہم اوریجنل سائن ہوتے ہیں ہر وکیل کے تقریباً جو ہے لفافوں میں، اور لوگ ان کے اعتماد کو بریچ نہیں کرتے. لیکن میرے لیے حیران کن یہ تھا کہ میں نے پولیٹیکل کم سمپیتھیٹک جو ایک ڈیسیژن لیا تھا، اتنا بڑا ڈیسیژن لیا تھا، جس کے لیے دوبارہ سے پھر مجھے پورے سال سے ایک نئی وہ مشق کرنی پڑی ہے، ایکسرسائز کرنی پڑی ہے. تو وہ انہیں اس چیز کا بالکل خیال تک نہیں رہا کہ کن الفاظ کے ساتھ اور کن باتوں کے ساتھ انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی. لیکن میں شکر گزار ہوں ان لوگوں کا کہ جنہوں نے وہ سیٹلمنٹ کروائی تھی. دے آر ود می الحمدللہ. اور میں اس سے بھی بڑھ کے یہ سمجھتا ہوں کہ اصل فیصلہ تو ان ووٹرز کا ہے، ان ممبرز کا ہے جو ہائی کورٹ بار کے ہیں، اور جو یہ سمجھیں گے کہ کون موزوں ترین ان کے ادارے کے لیے امیدوار ہے، وہ اس کو منتخب کر لیں گے. میں ڈیموکریٹ ہوں، ڈیموکریسی پہ بلیو کرتا ہوں، ول آف پیپل کو صحیح سمجھتا ہوں ہمیشہ. تو میری آپ کے پاس حاضری ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے قیمتی ووٹ سے ہمیں الیکٹ کرائیں. ہم انشاءاللہ خود بھی سرخرو ہوں گے اور آپ کو بھی سرخرو کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.